मेरे कुछ बहुत ही प्यारे दोस्त हैं कठपुतली कॉलोनी से जो यहाँ आए हैं बस मेरे कहने से और यहाँ केवल अंग्रेजी में बातचीत चल रही थी, मुझे बुरा लग रहा था बट बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमें आज जो हम यहाँ हैं। क्या हुआ था कि 10 साल पहले सागरिका जी शादी के बाद नॉर्वे गई थी। ये और इनके पति दोनों इंडियन सिटीजन थे और वहाँ उनके बच्चे हुए जो उनको इंडियन पासपोर्ट था लेकिन वो वहाँ रह रहे थे, उनके पति वहाँ काम कर रहे थे और अचानक एक दिन ये नॉर्वेजियन बाल व्यवस्था जो उनके मतलब ऑफिशियल्स हैं इनके घर पे आके इनके दोनों बच्चों को उठा ले गए। उस उम्र पे इसका बेटा 2.5 साल का था और इसकी बेटी दूध पीती 5 महीने की बच्ची थी और फिर सागरिका ने बहुत संघर्ष किया और जो भी लोग आज आए हैं वो उन्होंने मतलब इनको सपोर्ट दिया और बहुत ही कोशिशें के बाद 1 साल से ऊपर लगा बच्चों को वापस इंडिया भेज दिया गया और अब 10 साल के बाद सागरिका जी ने अपनी कहानी लिखी है जो अभी फिलहाल विश्वकर्मा पब्लिकेशन ने इंग्लिश में छापी है और हमारी उम्मीद है कि जल्दी वो हिंदी और बाकी सारे भारतीय भाषाओं में छपेगी। देखिए, नॉर्वे ने का कहना था कि सागरिका एक बुरी माँ है, इतनी बुरी कि इसके बच्चों को हमेशा के लिए किसी और को दे दिया जाएगा और इतनी बुरी कि उसे अपने बच्चों से मिलने ही नहीं दिया जाएगा, देखने तक भी नहीं दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि इतना सख्त प्रतिबंध एक 2 साल का बच्चा और 5 महीने की दूध पीते बच्चे की मां का खिलाफ अगर किया जाए तो वो क्या होगी? वो मानव जात की होगी ही नहीं, वो तो राक्षसी होगी। और आप बताएं, क्या आपको सागरिका राक्षसी दिखती है? नो, बिल्कुल नहीं। नो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि शेम ऑन नॉर्वे। एक महिला को तब उसकी 25 साल की उम्र हुई होगी, इतना इन्होंने पीड़ित किया, जलील किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्चे को दूध पिलाती थी तो बेबी को जब ले लिया गया तो माँ के शरीर में फूल जाता है, बुखार आ जाता है। 1 साल तक इस औरत जिसको कहा था कि वे इतनी बेकार, पशुओं से भी नीचे है ना, क्योंकि किसी को जब जन्म दिया और उसको फिर आप लेने नहीं दे रहे हो। 1 साल तक इस औरत ने रोज अपना दूध पंप करके बोतलों में डाल के नॉर्वेजियन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के ऑफिस में जाके दिया। 1 साल तक। और वो कह रहे हैं कि ये बेकार माँ है, इतनी बेकार कि अपने बच्चों को देख भी नहीं सकती। और जब ये बेचारी जाके पूछती थी कि क्या मेरी बेटी को ये दूध मिल रहा है, वो कहते थे हम आपको ये नहीं बता सकते, ये हमारा ऑफिशियल जॉब नहीं है, आपने दे दिया, हमने रख दिया, हम नहीं कह सकते कि उसको गया कि किसको गया। और बाद में जब इन बच्चों का रिपोर्ट आया, देखिए जो नाज़ी जो थे उनका चर्चा बार-बार होता है क्योंकि ये जो पूरी थिंकिंग है ये नाज़ी आइडियोलॉजी है कि मतलब इंसानियत तो है ही नहीं। तो इन लोगों ने नाज़ियों की तरह हर चीज को रिपोर्ट में लिखा है। और बेबी के बारे में क्या कहा, ऐश्वर्या उसका नाम है, कि जब उससे मां से ले लिया गया तो 2-3 दिन लगे उसको दूध पीने के लिए। आदत नहीं थी, मां का दूध पीते थी। अब देखिए ये क्या है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन है, ये बाल सुरक्षा है और ये हमें कहते हैं कि हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है बच्चों के लिए। और इसका जो बेटा है, मैं उसके वीडियोस दिखाऊंगी, हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ बच्चा। 1 साल जब वो नॉर्वे के फॉस्टर केयर में रहा, बिल्कुल बदल गया, दिन रात का फर्क है। अब इसकी सजा नॉर्वे को मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे अब थोड़ा अंग्रेजी में वापस जा रही हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हलवे को खाते ही पता चलता है कि उसमें क्या है। अब देखिए 10 साल से ये जो पूरा कांड हुआ ये 2012 में हुआ। 2013 से बच्चे
सागरिका के पास हैं। और आप इनकी किताब में पढ़ेंगे कि किस तरह अब वो सिंगल हैंडेडली सिंगल मदर होगी, क्योंकि इतने टेंशन में इसकी शादी भी टूट गई और उसका पति अभी नॉर्वे में ही है। इसने अपने बल से अपने बच्चों को पाला है। वो वहाँ एक गृहिणी होकर गई थी, आके उसने 4 डिग्रियां ली हैं, 2 कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और 2 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इस औरत को नॉर्वे ने बोला कि ये नालायक है। तो देखिए, अब मैं यहाँ रुकूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि 10 साल के बाद सागरिका के बच्चे कैसे हैं। ये पूरा मुद्दा इनके बच्चों से उठा है ना। तो दीपांकर दा, प्लीज अगर आप वीडियो नंबर 11 चलाएंगे। सागरिका के बच्चे। अब आप बताइए जॉली सर, ये है जिंदगी, ये है वो परिवार जो नॉर्वे अभिज्ञान और ऐश्वर्या से छीनना चाहता था, दूर रखना चाहता था। They were going to be made to stay with paid foster carers with no relation to them, no, in an alien country far away from anyone familiar and from their heritage. So again, all I have to say, और आप भी मेरे साथ बोलिए, shame on Norway. Shame on Norway. Shame on Norway. अभी मेरे बाद आप देखेंगे कि नॉर्वे से भी, इंग्लैंड से भी, हर जगह से न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं कि नॉर्वे चाइल्ड सर्विसेज बहुत ही इनह्यूमन और इनजस्टिस है। और उन्होंने, नॉर्वेजियन लोगों ने सागरिका को मैसेज भेजे हैं कि हम आपका आभार करते हैं कि आप इस चीज का अपने किताब के द्वारा खुलासा कर रहे हैं। This is not child protection, it is child oppression. The Norwegian child services system is inhumane, it is overzealous, it is racist, and in Sagarika's case, it also told bare-faced lies about her. You will read in the book how Barna inveigled itself into her home on false pretenses, saying that case workers will come to help her. You will read in this book how normal everyday interactions between Sagarika and her children were twisted and misrepresented by these case workers. You will read how their general comments about India showed their racism. One of the case workers was of British origin, and she's sitting there and telling Sagarika that your country is very oppressive, people have to marry to have children, they are not free to have children, and their children are also not free to do whatever they like. So when she got irritated about this, she said, you don't know anything until the British came, Indians used to run around without any clothes and were completely illiterate. And then, they look how we make films about ourselves, there's humor, there's self-criticism. That's what happens in a democratic country. So in this context, the movie Slumdog Millionaire was made, which all of us, watched, thought about, it was thought-provoking. But what we don't understand is that when we are honest and open about ourselves, the way these racist foreigners interpret it. She's been told that I've seen in Slumdog Millionaire, there was one scene, a humorous scene where the child is in an open toilet and it all goes up, all the stuff comes on it. They said that you make your children run around in their own extreme
Rita, and this person meant it. That's the kind of racism that she had to face. Then, when matters came to court, Barneverner, that's the name of this Norwegian child services, Barneverner said that the children feared the mother. They rejected her. ये जो child services system थी, उन्होंने बोला कि इसके बच्चे इससे डरते हैं, इससे भागने की कोशिश करते हैं, इनमें कोई प्रेम नहीं है, bonding failure, attachment disorder, eye contact नहीं, बात इतनी बुरी है कि बच्चे अपनी माँ की आंखों में नहीं डाल सकते, और जो बच्चा है वो माँ को देख के अपना सर धरती पे पटकने लगता है। ये सब उन्होंने कहा, लेकिन what they forgot is that this is the age of digital media, of the phone camera, of Skype. Sagarika was an excited new mother. Like all of us mothers of her generation, she took photos and videos on an almost daily basis of her beautiful babies. I'll show these to you, और आप मुझे इसको देख के बताइए, ये सारे वीडियोस बच्चों के लेने के पहले के हैं, जो सागरिका घर में उनके हस्बैंड तो काम पे होते थे, और माँ को ना अपना बच्चा इतना सुंदर लगता है, सचमुच भगवान की तरह सामने है, और वो उनको आंखें मतलब नहीं मोड़ सकती, और बार-बार हम फोटो वगैरह लेते हैं। आप इसको देख के बताइए कि अगर इसके बच्चे इससे डरते थे और उनमें कोई प्यार नहीं था। वीडियो नंबर 12। देखा, और बस कुछ 6 हफ्ते बाद इन लोगों ने इतनी बेरहमी से इन दोनों बच्चों को इस मां से छीन लिया। क्यों? सिवाय प्यार और मोहब्बत के आपने कुछ देखा इन वीडियोस में? There was no fear, no emotional disconnect, nothing. So what I am saying to you and what I am saying to you as a senior member of this government is that in Sagarika's case and in many of these cases, it's not just that there's an overzealous bureaucracy, it's not just that it's racist, it's all of these things, but it is also that they simply lie. They simply lie. And I believe that Sagarika should sue, she should take a lawsuit for damages against the Norwegian Child Protective Services, and she should bankrupt them, because they should not be allowed to do this again. And this for your sake, but also especially for your son, because in these videos में अभिज्ञान कितना खुश, कितना शांत, कितना नॉर्मल बच्चा दिखता है, but as I said, 1 साल बाद
सब कुछ बदल गया था। और ये कैसे हुआ? आप सोचिए, एक 2 साल के लड़के को अपनी माँ से छीन लिया गया, नो वार्निंग, नो प्रेपरेशन। बालभवन के ऑफिशियल उनके स्कूल में आए और उसको पकड़ के निकाल दिया। 1 मिनट वो अपनी माँ की गोद में है और वो और किसी को जानता भी नहीं है, पापा तो ऑफिस में होते थे। और दूसरा मिनट, the next minute, he is put in an utterly alien Norwegian home, and where his mother has just vanished in thin air. Can you imagine the effect on the psyche of a little child from such a brutal and sudden act? And his reports from the time, उस टाइम के जो रिपोर्ट्स थे, वो देखिए आपको ना, मुझे जब मैंने पढ़ा मुझे ऑलमोस्ट उल्टी की फीलिंग आई। उसमें लिखा है कि अभिज्ञान ऐसे लेट जाता था जमीन पे, prone, he would just lie like that. And I used to think क्या हो रहा है? पता है क्या हो रहा था? वो ऐसे धरती को वो पकड़ रहा था, अपनी माँ की बाहों को ढूंढ रहा था। This is what these people did to that little boy. And today he came back quite traumatized, just hanging his head over anyone's shoulder. This is what they did to him. They should be made, it is torture. It is torture of a poor innocent little boy, and Norway should be made to pay for this. And they should be, look at that, they should be made to pay for every tear. I have been through Sagarika for the torture that she had to go through for more than a year and a half. She was weeping all the time. And she was being told by these psychologists, don't cry, because that means you are an unstable woman. I mean, it's just horrible. Sagarika and I went to the Norwegian embassy last week and left an invitation, sir. We left an invitation for the ambassador, His Excellency Hans Jacob Frydenlunder. And he should have come here. He should have come here with folded hands and begged your forgiveness and begged the forgiveness of your 2 children. After Sagarika's case, I was contacted by other families facing the same all over the world. But I don't like to see Sagarika like this. It's her day of triumph. You got over that time is behind you. Let's give her another round of applause. After Sagarika's case, I'll finish very fast now. I was contacted by other families facing the same thing, sir, all over the world. You've heard from some of them today. I get calls from the USA, UK, Sweden, Germany and Australia. The maximum number of calls are from young parents on H-1B visas in the US working in the IT industry. And the IT firms here are doing nothing to prepare them about child services before they go abroad. They have no insurance to pay for even the legal fees, which runs up within weeks into lakhs and lakhs of rupees. So there is a real problem with these child protection agencies all over the Western world, and not just in Norway. I have a website. It's called www.saveyourchildren.in, where I collect all this material for awareness. Please go and have a look at it. It is a really serious and ignored humanitarian crisis. And I get overwhelmed. I get overwhelmed with calls at all times of the day and night from bewildered, anguished and even suicidal parents from far-off lands with taken children. So what we need, and if anybody has access, has a voice with this government, we need 2 things. First, we need to spread awareness. People are going to these countries without any idea about these overzealous and racist child protection agencies, about how difficult it is to get a fair hearing in child protection proceedings. And not only that, so it is a pattern in these cases that the parents have very weak language skills, English language skills. जो यहाँ से ये जा रहे हैं young couples, वो English speaking नहीं होते हैं और उनकी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर होती है. And if they are in a non-English speaking country, they've got no knowledge at all of the local language. So they also have no knowledge of the local culture. They have few friends, if any, among the local people, and this makes it all the more difficult for them to negotiate the child protection system. So the first thing that we need is for the government to spread awareness in all the Indian languages about these child protection services, because these are our fellow Indians and we must prepare our people for the kinds of alien and unfriendly systems that they may encounter abroad. The second
government to have a policy in these cases. There is no clear system in place. Parents have to desperately find contacts in the government who will press their case. Sometimes it works, like in the case of Sagarika, but at other times the Ministry of External Affairs just rebuffs these families. What we need is an automatic system where if an Indian child is removed in a foreign country from the parents, the embassy is immediately notified and a process is initiated for identifying relatives back in India who can take custody of the child while the parents fight their case abroad. The parents themselves request this because they feel that the child should at least be with relatives if not with them. We already have a network of child welfare committees in India for each district under the Juvenile Justice Act, and these children can be brought back under their responsibility. So it's not as though the child will just disappear once it's repatriated here. It will be a proper official process in coordination with the foreign authorities. In most of these countries, if a child is in foster care for more than 1 or 2 years, they are liable to be put up for adoption. This results in the total erasure of their identity and origins. On the other hand, if they are kept in foster care, they are allowed very little contact with the parents and none at all with relatives in India. It is a totally lonely and loveless childhood. This is a grave wrong against the child. The UN Convention on the Rights of the Child says that the identity, nationality, religion and culture of a child must be preserved. Other international human rights conventions make it incumbent on each nation of the world to protect and foster a child's ties with its kith and kin. In particular, there is the right of return to their country of origin in all persons, including children. Erasing a child's identity, preventing them from living among their own people, is nothing less than a form of cultural genocide. It is a very serious violation of the personhood and status of the child. For all these reasons, it is the duty both of the country of origin, that is India, as well as the foreign country to facilitate the placement of these children with their relatives back home. Only yesterday, our Honorable Foreign Minister, Mr. S. Jaishankar, said that this government's foreign policy has the people at its center, that it was a diplomacy for our civilization and a diplomacy that serves the people. In that case, it is my appeal to this government to come to the aid of these young and defenseless Indian families that are trapped by overzealous and racist child protective services abroad. In particular, it must do everything in its power to enable the repatriation of our Indian children to relatives in India while the parents fight the case in the foreign country. The Indian government must not allow denationalization and the cultural alienation of our children by these arrogant foreign authorities. Congratulations again to Sagarika and her adorable